Starting off from the scratch only, let's just start with the discussion about the syllabus which the IGNOU has prescribed for us. So broadly, we have 5 blocks, right? So I'll just give you a brief about each block, and my objective and my orientation would be to, to take care of students who are also from non-accounting background, right? Since it being the practical paper, so we have to have orientation starting from the basic concept of accounting to the advanced versions of accounting, going to the level of forensic accounting and your human resource accounting as well. So I'll be just starting off with the introductory brief about your syllabus, and then I will be eventually moving towards each block. So with the what I will do is कि आपकी एक क्लास जैसे आज है, I'll give you an orientation for what I'll be taking up in my next class. So those who are from non-accounting could have little time to grasp upon those topics, and they can take up with me in my next class. So let me just give you a brief about the first topic, the syllabus which we have. Certainly we have 5 blocks. The first block consists of about for those students who are from accounting background, they certainly must be aware about the concept of different accounting which we have studied in our different spheres of life. Say for example, we have studied financial accounting, we have studied management accounting, we have studied cost accounting per se. So if we talk about our syllabus touches upon each one of them to some or the other level. So if I talk about your block 1, it majorly talks about your financial accounting part, which is starting from how do we recognize a financial transaction, how do we record it, and what kind of consideration, what is the rule of accounting involved in that, and then from there to preparation of final accounts. So that is the syllabus for block number 1. And in the block number 2, certainly your block 2 and block 3 are more focused upon your syllabus about cost accounting. So cost accounting, if I say, will move eventually, but in second unit, what we have more of is, what is cost accounting. See, what happens is there are like different spheres of a business operation, right? What we see in the office is certainly different from what happens in a factory or what happens at a production level. So cost accounting is more emphasized and more concerned about what is happening at the production level or what is more happening at the operational level where the product is actually being manufactured. So unit 2 and unit 3 were majorly talk about that thing only, ki when a company is manufacturing a product, when a company is making a product, what kind of cost does it incur, how does it try to minimize the cost, how does it manage to maximize its profitability. So block 2 and 3 are about that. And then block number 4, certainly the point is, given a number, say for example, my capital of my business is, say for example, rupees 100 crore, right? And the profit which I've earned in a particular year is somewhere around 20 crores or 25 crores. So these literal numbers will make not much of sense to me until unless I interpret them, right? उनसे मैं जब तक कोई चीज़ का मतलब नहीं निकालूंगी, उन चीज़ों को समझूंगी नहीं, तब तक मुझे उसका इम्पोर्टेंस या उसकी सिग्निफिकेंस नहीं समझ आएगी. सो ब्लॉक नंबर 4 इस चीज़ पे एम्फेसाइज करता है कि जब आपके पास एक फाइनेंशियल डेटा है किसी कंपनी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको इंटरप्रिटेट कैसा करना है, उसको समझना कैसे है, वो ब्लॉक नंबर 4 में कवर करा गया है. Then a world which is totally away from these 4 blocks is block number 5. I just have a question to ask you. आप में से कितने जने कुछ केसेस को रिकॉल कर सकते हैं जहाँ पे आपने कुछ फ्रॉड्स रिपोर्ट हुए हैं, either coming from a banking company or any big corporate in India? Can you name some cases जहाँ पे काफी huge amount of fraud? Satyam Infotech, one of the oldest one. What else? Nirav Modi's Punjab National Bank. So these are the the golden and most historic cases which we have in our Indian banking industry. So this is where the picture comes, the concept of forensic accounting comes into the picture. Forensic accounting means, as the name says, when there is some kind of a conspiracy involved or where there is some kind of a fraud is reported, then getting back into the details, what
is being reported by the company, there comes in the picture of forensic accounting, right? So forensic accounting का जो main role play है वो basically ये है कि आज के टाइम में कोई केस रिपोर्ट हुआ जिसमें एक फाइनेंशियल फ्रॉड इन्वॉल्व है, उसको चेक करना है, तो वो फॉरेंसिक अकाउंटिंग वहां पे पिक्चर में आता है. सो हमारे लिए ब्लॉक नंबर 5 जो है उसमें एक एंगल तो हो गया आपका फॉरेंसिक अकाउंटिंग का और एक दूसरा एंगल और है. हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ CTC, cost to the company? How many of you are aware with that concept? Okay, if you want to, you can just mention it. You can leave a message about it. Yeah, I'm aware. Yes, what is the human resource account? What is cost to the company? The cost that company boasts for an FTE who works for the company for a certain period of time. As good as that, why a company should hire me and why the company should pay a certain salary to me, that comes to the point, right? Correct. कि आज एक कंपनी मुझे हायर कर रही है, मुझे करोड़ का पैकेज ऑफर कर रही है, then certainly they must have found something in me, therefore they are hiring me. There the concept of human resource accounting comes in the picture, right? कि what kind of value does a person add to the company and how much that employee or that individual deserves in form of a compensation against that is what we call human resource accounting. So say for example, if I say, when you join a new job, you are being oriented about the place, about the work culture, you are being trained about the software which the company uses, so that doesn't come free of cost to the company. The company has to incur some kind of cost, right? So in that particular case, the point is whether the company should pay that much of money to a particular employee or not. So there what comes to the picture is human resource accounting. So technically, if I talk about these last two topics, HRA and forensic, there are very, very deep and independent forms of accounting, which is again a specialized formations. But in our syllabus, to what extent we are supposed to cover that, after covering the syllabus, I should have a general understanding about these two phenomena of HRA accounting and forensic accounting, right? So I'll be starting off with the unit 1. And since I know there's a good number of students who are from non-accounting background, so I'll be taking care of them certainly. Just give me a minute. I'll be sharing my screen and we shall be discussing every topic one by one. See, before I start with my presentation, I just want to tell you that today I'm covering module 1 or block 1. So जो भी मटेरियल मैं आज कवर करूंगी वो पूरा ब्लॉक 1 को रिप्रेजेंटेशन में करते हुए है, नॉट अ कंप्लीट ब्लॉक, बट उससे आपकी बेस फॉर्मेशन हो जाएगा एंड यू विल गेट द connectivity back to the accounting which you guys must have had over a period of time, and for those who are doing it for the first time. So just give me a minute, I'm sharing my screen. Is my screen visible? Yes. Yes, it's visible. Okay, thank you so much. See, as I've already briefed you, without taking much of time in briefing about the syllabus, I'm starting off with the unit 1 or the module 1, which is further categorized into different parts and different aspects. The basic and the base forming thing about accounting is understanding the concept of the double entry system, or what do we call journal preparation, ledger, trial balance, and everything. See, the most beautiful part and most technical part, as well if I say, about accounting is कि आज के टाइम में अकाउंटिंग सिर्फ उसी चीज को इम्पोर्टेंस देता है जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो. So when we talk about the benefiting part or the limitation part, this plays both way the roles. आज मैं जो भी बात करूंगी, मैं हर उस चीज की बात करूंगी जिसको मैं मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकती हूँ, राइट? से फॉर एग्जाम्पल, आज अगर किसी एम्प्लॉय को मैं रिट्रेंच कर रही हूँ, राइट, सो फॉर मी दैट रिट्रेंचमेंट वोंट मेक एनी डिफरेंस इफ some kind of cost is involved into that. Say for example, मेरी वो पोजीशन 3 महीने के लिए खाली रहती है, सो वो 3 महीने का जो मेरा बिजनेस को जो लॉस हो रहा है, दैट विल ब्रिंग मी बैक टू द पिक्चर ऑफ अकाउंटिंग.
So the accounting core and core focuses upon anything and everything which is measurable in money and which is convertible into some kind of a monetary value anytime. So the सबसे पहली चीज है कि आज अगर मैं कोई अकाउंटिंग का काम करना शुरू करती हूँ, forget forensic, forget cost, forget anything, मैं जहाँ से बेस करना चालू करती हूँ वो किसी चीज को आइडेंटिफाई करने से चालू करती हूँ. आइडेंटिफाई यानी कि whether this particular transaction has some money thing involved or not. If money is involved, then okay, fine, I'll start doing the accounting part. So the first thing is identify only those transactions which have some kind of a measurability in terms of money, right? Second comes is your measure. आज मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, say for example, I am selling a product costing 100 at a selling price of 150. How much profit am I making? 100 की चीज अगर मैं 150 में बेच पा रही हूँ, how much profit am I able to make in this particular process? 50 रुपए का प्रॉफिट. 50 रुपए का प्रॉफिट, राइट? सो ये चीज क्या है? मेजरेबिलिटी. यानी कि आज मैं सबसे पहले क्या करूंगी? कॉस्ट को मेजर करूंगी, सेल्स को मेजर करूंगी और सेल्स का और कॉस्ट का डिफरेंस निकाल के क्या करूंगी? प्रॉफिट का मेजर करूंगी. ठीक है. सो द सेकंड थिंग इज आई नीड टू मेजर ईच एंड एवरी एलिमेंट व्हिच आई एम रिकॉर्डिंग इन माय ट्रांजैक्शन. यानी कि आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग इट एज अ a monetary worth of transaction, I need to measure its value as well. थर्ड इज रिकॉर्डिंग. आज मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, जिस चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं, कैन आई गिव सम काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन टू दैट? मतलब किसी चीज का मेरे पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी बैकिंग रिकॉर्ड, देन how will I justify that particular transaction? That is the major part of accounting. I just have a one question to you. आज मैं एक चीज से पूछती हूँ कि आप किन चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हो, मुझे बता सकते हो? From those from accounting background, I want to ask कि आज मैं किन चीजों को रिकॉर्ड कर सकती हूँ? एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपसे. एक चीज है जिसका मेरे पास बिल है, एक चीज है जिसका मेरे पास बिल नहीं है. कैन आई रिकॉर्ड दैट ट्रांजेक्शन व्हिच डजंट हैव अ बिल अगेंस्ट इट? कैन आई रिकॉर्ड सच ट्रांजेक्शन? No. No. Ideally I cannot do that. Can you tell me reason to that? One simple reason. आज जब मेरी उस बुक्स की ऑडिट करी जाएगी, उनको वापस ओपन करके मेरी ऑथेंटिसिटी को चेक करा जाएगा, दे विल रियलाइज कि आज मैंने अमाउंट परचेज के रूप में दिखा तो दिया, लेकिन उसको प्रूफ कहाँ है इसके अगेंस्ट. सो दैट हैज टू बी वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट कि आज आप जो रिकॉर्डिंग करेंगे आप उन्हीं ट्रांजेक्शन्स की करेंगे जिनके अगेंस्ट आपको टर्म बोल रही हूँ वाउचर्स है या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स है. आप उन्हीं को क्या कर सकते हैं? आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा सकते हैं. अगर वो नहीं है देन सर्टेनली यू कैन नॉट रिकॉर्ड दोस ट्रांजेक्शंस आइडियली. फिर उसके बाद क्या होगा? क्लासिफिकेशन. आई विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक लिटिल लेटर इन माय कंटेंट. क्लासिफिकेशन बेसिकली आज क्या चीज है? मैं आज एक सिंपल सी चीज पूछती हूँ, क्या मैं एक पर्सन जिससे मैं प्रोडक्ट क्रेडिट में परचेज कर रही हूँ और एक ऐसा पर्सन जिसको मैं क्रेडिट में सेल कर रही हूँ, क्या मैं दोनों को एक जैसा मान सकती हूँ क्या अपने लिए? कैन आई ट्रीट देम सेम? नो मैम. आइडली नॉट. यहीं पे क्या आता है? आपका क्लासिफिकेशन का पॉइंट आता है. आई विल टॉक अबाउट दिस लेटर, हाउ डू वी डू द क्लासिफिकेशन पार्ट. यानी कि नॉट एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन हैज ऑल द अकाउंट्स व्हिच कैन बी पुट इनटू द सेम कैटेगरी. हर ट्रांजैक्शन से मेरी कुछ ना कुछ एक अलग कैटेगरी ऑफ इवेंट होता है और उससे अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स क्रिएट होते हैं. उसका क्लासिफिकेशन आई विल कवर टुवर्ड्स द later end of my presentation. Then comes is my summarizing. I'll ask you one particular thing. अगर मैं एक ही जगह पे परचेज, सेल, ठीक है, उसके अलावा कोई मशीनरी परचेज, उसके अलावा आपका लॉस बाय थेफ्ट, अगर इन सब चीजों को मैं एक जगह रख दूं, will you be able to make some sense out of it? If I put everything at one place, will I be able to understand it? No. No ma'am. No. Then in that case what comes in the picture is summarizing. Summarizing यानी कि आज once the classification is someone's mic is unmuted, kindly mute yourself. Thank you. So once I've identified, okay, these all are common type of transactions, now I need to summarize it or cut it short.
कि आज मैं अगर उसको इंटरप्रिटेशन निकालना चाहूँ तो उसका कुछ इंटरप्रिटेशन ड्रॉ कर सकूँ, तो मैं वो कहाँ करूँगी? समराइजिंग में. नाउ here comes the full stop point at level 1. इसको हम क्या बोलेंगे बेसिकली कि आज आपके पास एक फाइनेंशियल डेटा एक सिस्टमैटिक वे में हाथ में आ गया. आपने पहले इसको आइडेंटिफाई करा, मेजर करा, रिकॉर्ड करा, क्लासिफाई करा, and you have a summarized form of information at your end. Now the point is I need to make some sense, I need to make some kind of sense out of it, right? How will I do that? By analyzing my results. एनालाइजिंग में क्या होगा? बेसिकली मैं कुछ ना कुछ एक मेथडोलॉजी, कुछ टेक्निक इन्वॉल्व करूंगी जिससे मैं क्या करूंगी? अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एनालाइज करूंगी. एंड द लास्ट इज रिपोर्टिंग डेटा. आई जस्ट हैव अ क्वेश्चन टू यू. अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या क्या होते हैं? What are the different forms of business, students? Hello, ma'am. Yes. Credit transaction, cash transaction. How many of you heard about the concept of sole proprietorship, partnership, company? Yes. Like broadly, and now we have a fourth version as well, which is our LLPs, limited liability partnership, right? That is a fourth version which we have. But my point is कि आज के टाइम में अगर मैं पूछूं, according to you, which form of business has the maximum accountability to share the information? किस form of business को सबसे ज्यादा पब्लिक को information share करनी पड़ती है? The ones which have already launched the IPOs and they have investment from the people. Which is the listed companies. Correct. Sorry, I don't know the terminology. No, you have said it very right, sir. Very right. This is particularly more related to listed companies, right? And जो सबसे कम है वो किन के लिए है? The least amount The of LLPs or the Kirana kind of stuff. Not even LLPs. See, okay. LLPs do have certain features of that of a company, so they are also accountable to their investors. But if I talk about the sole proprietorship form of businesses, then they certainly have the least amount of responsibility to share the information with the public. So if I say, how many of you have read the annual reports of companies? If you have, I think I have read once or twice, yes. Okay, what about others? Have you guys read any annual accounts, annual reports of a company? No, ma'am. Okay, all right. Certainly the best part is we have that in our syllabus as well. जब हम आगे financial statement analysis की तरफ जाएंगे towards a later block, there you have a content called interpreting the results of your annual reports. So I'll talk about of it more in detail there. But why I'm mentioning it here is, let me get back to my slide. The reason why I'm talking about here is because of the reporting of data. So when I have my things being recorded, then being analyzed, the point is that has to be shared with the public. So that is the last step of the accounting, which is sharing your information with the public in form of annual reports, or if you have visited the websites like moneycontrol.com, any financial portals, there you will find that a lot of information about the company is made public, about different kinds of ratios, their balance sheets, their trading P&L account, or what right? So that kind of information is being given there. So accounting this is the basic, if I say the pillars of accounting. Anything which is measurable in money has to be identified, measured, recorded, classified into a particular set of categories. Then it has to be drawn down the summarizing form, and then it has to be analyzed and reported to the people of interest, right? Now the second point comes is there are three things: bookkeeping, accounting, and accountancy, right? So what we are studying is accounting for managers. So accounting means anything which is related to the requirements, the rules, regulation, how am I supposed to do that thing. यानी कि आज अगर एक मैनेजर है उसको अकाउंट बनाने हैं तो वो कैसे बनाएगा. So that is our syllabus, right? So our whole content is categorized into three broad phenomena: bookkeeping,
Next is your accounting, and third is your accountancy. Let me just start with very simple set of things. See, bookkeeping is something uh, in which I identify the transaction. मैं आइडेंटिफाई करूंगी, उसको मेजर करूंगी, उसको रिकॉर्ड करूंगी और उसका क्लासिफिकेशन करूंगी. आई जस्ट हैव टू आस्क वन दिस क्वेश्चन. आप में से कितने लोगों ने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स का कंसेप्ट पढ़ रखा है? How many have studied these 3-4 terms? Journal, ledger, trial balance, and your final accounts. How many of you have studied that? Anyone? All right. I could make out from the the responses that not many of you are aware about it. So it's okay. I'll give you a brief about it. See, आज एक चीज होती है कि if you want to write about it, it's okay. If you don't want to write about it, you can listen to me very much clearly. कि आज सबसे पहले मेरे पास एक वाउचर आया. वाउचर के बेसिस में मैंने आइडेंटिफाई करा कि ये परचेज की ट्रांजैक्शन है and which is obviously measurable in terms of money. Now the point is, what I'm supposed to do with this voucher or a bill which I have received for a particular transaction? Then in that case, what I'll do is I'll record it for the first time. And the book where I'll record it is what we call journal, यानी कि books of original entry, जहाँ पे इस transaction को acknowledge करा जाएगा और उसको first time record करा जाएगा. Just give me a second, students. Right? And after that, what comes into the picture is कि आज मैंने किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया. नाउ व्हाट आई विल डू इज, यानी कि रिकॉर्डिंग में क्या करा मैंने, जर्नल बनाया. ठीक है. उसके बाद मैं क्या करूंगी, जितनी भी परचेज की ट्रांजैक्शन है या जितनी भी सेल्स की ट्रांजैक्शन है उन सबको मैं क्या करूंगी, एक जगह लेके जाऊंगी. आई विल ब्रिंग देम टुगेदर, आई विल पूल देम टुगेदर एंड आई विल प्रिपेयर माय लेजर. After that, okay fine, I have my ledger. मेरे पास सेल्स अकाउंट है, मेरे पास कैश अकाउंट है, मेरे पास परचेज अकाउंट है. ना द पॉइंट इज व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू विद दैट. आज अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मुझे इस महीने में बताओ कि तुम्हारी कितने की परचेज हुई या कितने की सेल हुई, सर्टेनली मुझे काफी टाइम लग जाएगा उसको इस आंसर को देने के लिए. टू अवॉइड दैट सिचुएशन, आई विल प्रिपेयर माय ट्रायल बैलेंस. व्हाट आई डू इज आई प्रिपेयर माई ट्रायल बैलेंस, यानी कि इस महीने के फाइनल जो बैलेंसेस है मैं उसको क्या कर दूं, एक ट्रायल बैलेंस में इंटीग्रेट करके फाइनल रिजल्ट्स को ड्रॉ कर दूं. दैट इज व्हाट वी कॉल समराइजिंग. सो द पॉइंट इज, बुक कीपिंग इसी का पार्ट है, अकाउंटिंग का पार्ट है, जहां पे मैं उस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड और क्लासिफाई कर रही हूँ. नाउ the point from which I'll start doing this summarizing, analyzing part is becoming my accounting. And accountancy is my periphery or my framework जिसमें ये सब काम होगा. मतलब आज तुम बोल रहे हो, सोच रहे होगे नॉन अकाउंटिंग वाले कि मैम आप किस बेसिस पे ये सब बातें बोल रहे हो. तो मैं ये सब किसके बेसिस पे बात कर रही हूँ, अकाउंटेंसी के फ्रेमवर्क, कहते हैं ना वो पिलर्स के बेसिस पे जो कि ओवर द इयर्स वी हैव स्टडीड. Right? So bookkeeping, accounting, if somebody would ask you whether bookkeeping and accounting are different from each other, no, they are dependent upon each other. आज जब तक मेरे पास लेजर अकाउंट नहीं होगा तो मैं ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकती और अपने फाइनल अकाउंट्स बिल्कुल भी नहीं बना सकती. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल द सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बुककीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी. एक चीज होती है डबल अकाउंटिंग सिस्टम. प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. यहाँ से आपका प्रैक्टिकल वाला एक एस्पेक्ट स्टार्ट हो रहा है. आज मैं एक चीज पूछती हूँ, मैंने अपनी कंपनी के लिए 1 लाख वर्थ ऑफ रॉ मटेरियल परचेज करा. जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली. आई हैव स्पेंट ₹1 lakh from my cash balance and I purchased the material of say ₹1 lakh. Now I want to ask you कि इसका इम्पैक्ट क्या है. मतलब आपके अकॉर्डिंग
क्या इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट होगा, मतलब मेरे ओवरऑल बिजनेस में क्या चीज क्रिएट होगी, क्या चीज डिटोरिएट होगी, क्या चीज होगी बेसिकली? कैन समबडी टेल मी? हेलो। यस। हाँ मैम, 1 लाख 1 लाख रुपीज हाँ हाँ मेरा ये था, कैश था, जो भी था। हाँ हाँ आई परचेस्ड 1 लाख रुपीज मटेरियल. यस Then I have no other money to production this material, to manufacturing. रोलिंग कैपिटल जो होना चाहिए वो मेरा पास नहीं है. Okay, all right. So, let me just, even more clarify a particular situation. Say, for example, I have those, that amount of money which I need. Say, for example, I have it in my vault. I have 1 lakh rupees in my vault. All I need to do is I need to put it out and buy the raw material for my business. अभी मैं प्रोडक्शन की और इसमें से किसी चीज की बात नहीं कर रही. यहाँ पे सिंपली क्या आया, मेरे बिजनेस में रॉ मटेरियल आया और मेरे वॉल्ट में से मेरे बिजनेस का 1 लाख रुपए का कैश चला गया. राइट? यही क्या है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम है. डबल अकाउंटिंग सिस्टम ये बोलता है कि आप बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन उठा के देख लो, इफ यू पिक एनी ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, देन एट लीस्ट 2 accounts will be affected in that particular process or in the due process of that transaction. Minimum of 2 accounts. I give you another example to that. Say for example, मैंने 1 लाख का cash I have in my vault. I have to buy raw material rupees 1 lakh worth of, and the company is ready to offer me discount of 20%. कंपनी बोलती है कि अगर आज आप हमसे 1 लाख का मटेरियल परचेज करते हो तो हम आपको 20% का डिस्काउंट देंगे. सो इट इज अ काइंड ऑफ सेविंग विच आई एम डूइंग. अगर मैं अगर कैश पेमेंट करने को तैयार हो जाऊं तो 1 लाख का माल मुझे आज कितने में मिल जाएगा? 80,000 में. इट विल बी अवेलेबल टू मी. So it's a kind of saving which I'm creating for my business, or it's kind of a profit which I'm creating for my business. So again इसमें क्या हुआ, इसमें 3 चीजें इफेक्ट हुई. डिस्काउंट का मिलना, 1, डिस्काउंट रिसीव्ड. सेकेंड, आपका जो मटेरियल आया, आप जो परचेज कर रहे हो उसका इनकमिंग. थर्ड, आपके वॉल्ट से 80,000 का कैश जाना. यानी कि इस पूरे प्रोसेस में कितनी चीजें इफेक्ट हुई? 3. सो डबल अकाउंटिंग सिस्टम सेज if one thing is coming the another will be going, and if one is going the other would be coming. सी अभी के लिए आप इस तरीके से समझिए, फिर आगे जब मैं रूल्स ऑफ अकाउंट्स बताऊंगी आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, तब यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम को कैसे इम्प्लीमेंट करा जाता है. सो आई होप आई एम क्लियर विद द डबल अकाउंटिंग सिस्टम कंसेप्ट. स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम अंटिल पॉइंट 3? No ma'am, okay. Okay. No, ma'am. Right. No, Now, ma'am. thank you so much. Now the point number 4 comes is इतनी सब मेहनत, so much of effort, preparing the journal, preparation of ledger, summarizing. For whom I'm doing this? So I'm majorly doing it for, if I be very real with you, the most important is my shareholders. Can somebody tell me who are shareholders? Shareholders कौन होते हैं basically? Who invest their money for the company. Yeah. And secondly, there is one more distinguishing feature of these shareholders. They Who own, owns? They own equity in the company. They are the owners to the company. Yeah, owners of this company. Yes, correct. They basically own the company. आज अगर मैं किसी company के, if I'm shareholder to a particular company, which means up to as good as 3 shares or 300 shares worth of power, I have the power to rule over the company. I own that company. वो company मेरी कहलाएगी. So the most important party who is really very interested is people who are giving money to you. उनको आपकी कंपनी के फाइनेंशियल डेटा से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी कि वेयर आई एम गिविंग माई मनी टू, जिस कंपनी में आई एम becoming the owner, what is the position of that company. They are the most ideally interested parties. Second is your employees, to in which company I'm working for. Say for example, if my company is a loss making company for 5 years, then certainly I may not have my job security, or certainly I may not even get my salaries on time, right? Third, creditors. How many of you are aware about the term creditors? I'll put one more term here, lenders.
How many of you are aware about this particular term, creditors? Yeah, a company or a person who gives money or borrowed money, gives borrowed money. The point is anyone who to whom the company owes to repay or pay back the amount which the party is providing is what we call creditor. आज मेरी कंपनी है, उसने अराउंड 60 लाख वर्थ ऑफ का परचेज क्रेडिट पे कर रखा है मटेरियल का और फाइनल इफ आई एम ट्रेडिंग कंपनी देन उस कमोडिटी की परचेज मैंने क्रेडिट पे कर रखी है. So that person or that company is creditor to me. I need to pay that party some amount. And one more thing which you guys can differentiate between a lender and a shareholder. क्या difference होगा दोनों में, मुझे बता सकता है? Anyone who lends you the money and anyone who owns the equity in your company, दोनों के में क्या difference होगा, मुझे बता सकता है? Ma'am, shareholder has a share of this company, and lender has given the money for growing the business. And after some certain amount of time, the lender will get back the amount. So they doesn't Right. have, yeah, they doesn't have, do not have the share in the company. Lenders will get Please. lenders will get interest and shareholders will get equity. Or they will get the dividend. Shareholder gets the dividend, lenders get the interest amount. I'll just give you a very smart difference here. आज अगर आप किसी कंपनी को उधार दे रहे हो, those who could understand or relate to the term उधार, or those who actually are giving you the money on on the agreement of a loan. अगर आप लोन अरेंजमेंट के अंडर हैं तो उस केस में कंपनी बाउंड है आपको आपका पैसा लौटाने के लिए, right? You have the first hand right to receive back your amount which you are giving to that person. But on the contrary, shareholders, they anticipate and they expect the growth in their investment. But if at all, to the worst of the adversity, the company fails, the company becomes non-performing or the company becomes loss-making, then in that case, shareholders cannot go to the company and say, we want our money back. Right? They do not have rightful claim on the return of their money, which means कि आज के टाइम में अगर आप लेंडर हो तो आपको पैसा मिलने की सिक्योरिटी ज्यादा है एज अगेंस्ट ऑफ द शेयर होल्डर. ठीक है. Here I will introduce you to very interesting term. आप समझना, एक होती है internal debt और एक होता है external debt. Right? You will be understanding very much more clear later on. Internal debt का मतलब ये होता है कि वो पैसा जो कंपनी के अंदर के लोग यानी कि इंटरनल पीपल को कंपनी ओन कर रही है, यानी कि कंपनी को अपने अंदर के लोगों को पे करना है, वो क्या है, आपका इंटरनल डेब्ट है. वहीं पे जब यही अरेंजमेंट बाहर किसी पार्टी के साथ होता है, जैसे कि बैंक्स हो गए, डिबेंचर होल्डर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ये लोग क्या है, दे आर द एक्सटर्नल पार्टीज टू द कंपनी. सो द पॉइंट इज कि सबसे पहले किसका क्लेम सेटल करा जाएगा, एक्सटर्नल बोरोवर्स लेंडर्स का. फिर उसके बाद क्या आती है, बात की अंदर की कंपनी इंटरनल मेंबर्स की बात आती है. उसमें कौन लोग हो जाते हैं, आपके शेयर होल्डर्स. सो द पॉइंट इज फर्स्ट the lenders would be paid off, and if at all the remaining amount is left, then in that case the internal lenders which is shareholders will be paid off. So the point is security किसके हाथ में ज्यादा हो जाती है, lenders के केस में. ठीक है. उसके बाद आती है गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, कंज्यूमर्स एंड अदर्स. Can somebody tell me why would a consumer be interested in the accounting information at all? एक कंज्यूमर क्यों इंटरेस्टेड होगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए? Hello. Yes. Yeah, good afternoon, ma'am. I think the accounting information will give the exact the positioning of the company. I mean, where exactly the company is positioned as far as the figures of the company. Are they doing good in the returns? Are they going down in losses? That's what exactly the accounting numbers anybody would be interested for. So whether they would be directly interested, the answer is no, right? Yes. So they won't be the people. It is, let me tell you, the shareholders, the creditors, the long-term lenders, the management,
and later comes is the government. If at all some kind of a scam is reported or some kind of lacuna is reported in the company, जिसका सबसे best example देती हूँ taxation authorities. So taxation authorities, they are not directly the government, but they work under the setup of the governmental institution in a particular country. So if at all any kind of tax default is reported or miscalculation or some kind of money laundering setup is involved, so then in that case the government would definitely come into the picture and look into the company. But principally, originally, shareholders, creditors, lenders, and the management are the ones who will originally look into the well-being of the company's accounting information. Accounting is a quantitative phenomena but should have qualitative traits as well. Can I say one thing? What do we term reliability? Reliability का मतलब क्या होता है? Nothing but standard. We talk about? It's nothing but standard. Okay. Standard of quality or of product or all right. Yeah, reliability The is basically transaction which shows accurate and truthful transaction. Something on which I can rely upon, I can trust upon. reliability is also, that the things will be going on as per planning and the company will not become a bankrupt or something like that. मतलब जो हमने प्रपोज किया है उसी हिसाब से कंपनी चल रही है. बिल्कुल. And moreover, if not that, then the point is, can I trust the information pieces which the company is sharing with me? That is my main thing. What is the authenticity, originality, and truthfulness of the company, and whether a shareholder can invest on that basis or not. So that is where I am saying that, it may be talking about numbers, but those numbers have to be legitimate and trustworthy enough so that people can depend upon it. So that is the qualitative aspect about the accounting which we can, talk about here. So see, for those people who have had the opportunity of, studying it at this, at their, schooling level, about what are the different concepts of accounting, then certainly you will be able to relate it well with. The first is business entity concept. Let me just ask you one thing. When we talk about the company, we talk about the health of the company or the health of the people who are running that company. What we are talking about when we see the accounting information. कि आज कंपनी के डायरेक्टर्स की स्ट्रेंथ कैसी है, बोर्ड की स्ट्रेंथ कैसी है, बाकी लोगों की एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ कैसी है, हम वो देखते हैं या फिर कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स को एनालाइज करते हैं. व्हाट डू वी लुक एट? कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स. So that's where we got the concept of business entity concept. यानी कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही या उसकी नहीं हो रही जो बिजनेस को रन कर रहा है. हम बात करते हैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से. दैट इज इवन इफ व्हेन यू आर अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी फर्म और यू आर पार्टनरशिप फर्म or you are a company, we are recording or we are understanding the data from the perspective of the business and not from the perspective of the people who are running that business. Yeah, because actually it is very important कि किस सेक्टर में वो कंपनी बिजनेस कर रही है, किस चीज में वो कंपनी जा रही है और उस सेक्टर में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं. सो उसको हम देखते हुए we see कि this company will do because it will be having a monopoly. अगर उसमें बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं then they will give the competition to that particular company. So उसका ग्रोथ जो है वो लिमिट हो जाएगा. Right, you have given a very clear view about when we talk about analyzing the results of the data based upon the, say for example, if I say out of 100% market share, there is one company which owns almost 85% in the market. So certainly that company holds a very dominant position in the market. So from where I'm getting that data? I'm getting that data from the final accounts of that particular company or that organization. Second is money measurement concept. I have given this thing very clearly above as well. That like in pandemic, most of the sectors in stock market were falling except the health sector. जैसे जो कोविड में जो मेडिसिन यूज होते हैं या जो बना रहे थे रिसर्च में और जो उसमें इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे थे जो भी थे और जो कंपनीज वो बना रही थी उनके शेयर्स ऊपर जा रहे थे और बाकी शेयर्स नीचे आ रहे थे बिकॉज द ग्रोथ उसमें ही दिख रहा था उस पर्टिकुलर पेंडेमिक में.
And the worst affected sector, if we talk about that very aspect, sir, that in that case, the That was hospitality, hospitality tourism was was worst the hit. मतलब worst hit. एयर ट्रैवल वगैरह या जो भी हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड थे सेक्टर्स, And they were those the were worst most worst hit in that scenario. Definitely, and we got to know from the data which we are talking about here. Correct. Second is money measurement concept. I have talked about it fairly enough about it now, that anything and everything has to be measured in terms of, it could be either dollar, pound, yen, rupee, anything, but it has to be measurable in terms of money. Third is continuity concept. I just have a question to ask. Does anyone start a business with the thing कि मैं कल उसको बंद कर दूंगा या फिर after 1 year I'll shut my business? Nobody does that. So everything which you are putting it forward in a form of accounting data or whatever you're doing, you are thinking that will live long, will live for a longer period of time. Next is, I have a question. Say for example, I'm a small businessman, right? And in that particular case, what has happened is, just a second, please. Ashwin, please mute yourself. Yes. Thank you. Right. One very simple thing. I'm a very small business individual, and the quantum of sales which I'm able to generate in a particular month is, say for example, just a second, which I'm able to generate in a particular month is say 20,000, 30,000 rupees, 35,000 rupees. And one fine day, somebody came to me and said कि I want to buy stock worth of rupees 15,000 from your shop. उन्होंने बोला कि मैं आपकी शॉप से 15,000 का अमाउंट का सामान लेके जा रहा हूँ या जा रही हूँ, and I'll pay you in next month. मैं अभी स्टॉक लेके जा रही हूँ लेकिन मैं आपको नेक्स्ट मंथ में पे करूंगी. Now the point is कि इस सेल को मैं इस महीने की मानूं, since I am being a very small business venture, for me cash counts. Anything which is converted into cash is real money for me, right? But अभी इसका क्या हुआ कि सेल तो गुड्स तो चले गए मेरी शॉप से, लेकिन उसके अगेंस्ट उसने पेमेंट नहीं दिया मुझे अभी. So according to you, should I incorporate this as a sale in my current month or in the month in which that party is agreed to pay? Next month. When we realize the amount, then only it will be considered in that particular month, I guess. Not in the month. Okay. Not in the month कि जब उसको सामान लेके गया, लेकिन जब उसने पेमेंट किया उस मंथ में the entry should be there. All right. The point here is we have two things. We have accrual concept and we have a cash concept, right? For what my situation was, in that cash concept worked. कि आज जब तक मुझे कैश में realization नहीं होगा, I don't treat it as my real transaction. But on the contrary, if I talk about the bigger businesses where the maximum amount of sales are happening through credit arrangements or maximum amount of purchases are happening through credit arrangements, then in that case, what people bigger case, मतलब bigger businesses में that accrual is prevalent. And वहाँ that पे is, होता है. and when we have analyzed, the research has been done over a period of time, accrual has been found to be more acceptable form of accounting, which means for those or from non-accounting, please understand, आज कई बारी चीजें क्या होती है कि आपकी कैश में the whole objective of doing accounting is to manage and to acknowledge your your financial position, your liquidity position and your solvency position. Overall आपको अपनी हेल्थ को डिटरमाइन करना होता है. So उसके लिए क्या होती है, अलग अलग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती है. So the point is कि अगर किसी पर्टिकुलर पीरियड में कोई ट्रांजेक्शन हो गई है, मैंने से फॉर एग्जांपल मैंने कोई मशीनरी परचेज कर ली है, लेकिन उसकी मैं अभी इंस्टॉलमेंट अभी पे नहीं कर रही, मैं आगे जाके इंस्टॉलमेंट पे करूंगी या after 2 months I'm supposed to settle that account. The point is क्या उस परचेज ऑफ मशीनरी को मैं अभी का खर्चा मानूं या एक्विजिशन मानूं या फिर जिस टाइम उसको पे कर रही हूँ उस टाइम उसको रिकॉर्ड करूं. So that comes into the picture two things, accrual and cash. Accrual means whenever and everything a transaction is occurring. Say for example, आज मैं आपसे चीज पूछती हूँ, मैंने पार्टी को पोजेशन ट्रांसफर करा है, अभी बिल इशू नहीं करा है, I haven't issued the bill. So when will that be recorded? When will that be recorded? I just answered the question. The ownership title cannot be transferred without that piece of bill. I haven't issued that bill. Then what?
When you issue the bill, ma'am. आइडियली। सो द पॉइंट इज, दो चीजें हैं, जब मैं बिल बना रही हूँ तब उसको एक्नॉलेज करूँ, या उसके बदले जब कैश रियलाइज करी उसको तब एक्नॉलेज करूँ। ठीक है, यहीं पे क्या निकल के आता है, अक्रूवल कंसेप्ट एंड कैश कंसेप्ट। यानी कि जब तक किसी चीज का पेमेंट कैश में हो रहा है, एक्चुअल पेमेंट, या रियलाइज नहीं हो रहा, तब तक उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाओ ही मत। ठीक है, अक्रूवल क्या बोलता है, व्हेन दैट ट्रांजैक्शन इज बिकमिंग अ लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन, तो वो वहां पे क्या हो जाएगी, उसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। यानी कि जब आपने उसका बिल इशू करा, प्लीज समझना, पोजेशन ट्रांसफर करना और ओनरशिप टाइटल ट्रांसफर करना बहुत अलग चीज है। तो मैंने अगर ओनरशिप टाइटल ट्रांसफर कर दिया लेकिन पैसा नहीं मिला उसके अगेंस्ट में मुझे, तो मैं उस ट्रांजेक्शन को अक्रूवल के अंडर रिकॉर्ड कर लूंगी। लेकिन अगर मेरे को कैश रियलाइज हो गया तो मैं उसको कैश कंसेप्ट के अंदर उसको रिकॉर्ड कर लूंगी। सो देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग योर अकाउंटिंग। यानी कि किसी चीज को कब एक्नॉलेज करा जाए, जब उसका कैश आ जाए तब, या वो ट्रांजेक्शन लेजिटिमेट हो जाए, या फिर उसके अगेंस्ट बिल जनरेट हो जाए, वो ट्रांसफर हो जाए तब। सो मोस्टली जो बड़ी कंपनीज होती है वो अक्रूवल फॉलो करती हैं, और जिस तरीके छोटे बिजनेस जैसे किराना शॉप्स हो गए, स्मॉल वेजिटेबल वेंडर्स हो गए, छोटे दुकानदार हो गए, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कैश कंसेप्ट पे ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, सो हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ योर, जस्ट अ सेकेंड, here comes the concept of accrual concept and cash concept. Next is, see, the continuity and going concern are the same, so I'll remove it from here. So if I put it here, it is going concern concept, which means people may come, people may go, but the business will continue for the the longest term of the business. Going concern concept, right? अब इतनी मेहनत करने के बाद, now I have a basic understanding of only recording those monetary transactions. Now what I'm supposed to do with that? Now I'll prepare the trading P&L account and the balance of my business. I'll talk about this cash flow statement little later. I'll just stop here for for today. Tomorrow for the next class, how many of you are aware about the classification of accounts, by the way? How many of you are aware about the classification of accounts? No, ma'am. You are not aware about No it? idea, ma'am. Okay, no problem. Not at all problem. Tomorrow I'll go. I hope I'm clear until here. Whatever I've delivered for today, I hope. Yes, ma'am. Right? Yes, So ma'am, absolutely. I'll go with the pace for tomorrow as well. For the traditional approach and the modern approach, if I say, the base or the strength of the accounting comes from this particular topic. So it is, tomorrow's class will be really very important, because I'll be talking about the base forming exercise of your your upper level of accounting. So see, I want to know one thing. How many of you understand about the difference between the profitability and financial health? किसी को इसका डिफरेंस पता है? फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब समझना और किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को समझना। प्रॉफिटेबिलिटी बेसिकली मींस ईयर ऑन ईयर सेल्स कितना हो रहा है, उसमें से प्रॉफिट कितना आ रहा है, एंड if at all you're talking about the financial health, it means what are the reserves, balances kitne hain, means how much of money you have to more to expand and to see to the expenses. So right now I'll give you a very interesting difference here. See, whether you are using your money, say for example, अगर आज मैं किसी बिजनेस में 1 लाख रुपए का या 10 lakh worth or 1 crore worth of capital लगा रही हूँ, whether I'm making any sense out of it or not, that I'll come to know about from my profitability position. यानी कि आज मैं उससे बिजनेस कर भी पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, that will I get to know about from my statement of profit and loss account. यानी कि आज मेरी profitability position और मेरी financial health, just a second. I'm so sorry, there was a drop of a call at my end. So sorry. Right. So the point is whether money which I'm putting into the business, whether I'm able to convert into a genuine sales or not,
and whether I'm able to generate profit out of it or not, that I'll come to know from my statement of profit and loss. And on the contrary, right, on the contrary, what kind of asset structure, asset means how much worth of machinery do I have. Say for example, if I talk about pharma based companies, or if I talk about steel industries, so these are Yes, ma'am. hugely capital intensive companies. Abhijit, please can you mute yourself? Sorry. Oh yeah. थैंक यू. सो द पॉइंट इज कि आज मैं किसी बिजनेस में से, मैं अगर कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस की बात करूं तो उन केसेस में क्या होता है, उनकी मशीनरी, उनकी बिल्डिंग, उनका प्लांट, उनका स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है, राइट. सो दे इन्वेस्ट hundreds and crores of money into that. So how is that their capital structure? वो सब चीजें मुझे कहाँ से पता चलेगी? आपके बैलेंस शीट. यानी कि आज मैं सिंपल सी चीज बताती हूँ, बिजनेस कितना कमा रहा है, how much money is a business making, that will come to know from my statement of profit and loss. और बिजनेस की क्या पोजीशन है कि अगर आज कंपनी को बंद कर दिया जाए, उससे रीपेमेंट क्रिएट करा जाए, उसको बंद कर दिया जाए, तो कितने लोगों को अपने असेट्स में से पैसा दे सकती है, वो आपको किससे पता चलता है? आपकी बैलेंस शीट से. सो आइडियली योर प्रॉफिटेबिलिटी शुड कीप ऑन रनिंग so that your balance sheet is also improving at the end, right, ताकि आपकी financial security भी maintain रहे. So that is where two things comes into the picture, the statement of profit and loss, and second comes is your balance sheet. So I'll talk about more of it detail in my tomorrow's class, and tomorrow's class will again be very important because these are very base forming classes, so kindly do not miss